अभी लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, they were asking for फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू में लेंथ हमने लेंथ विड्थ और हाइट फाइंड आउट किया था। तो लेंथ इज फाउंड टू बी 60, देन विड्थ इज फाउंड टू बी 57, 40 plus 10 plus this thing is 7, okay, and height is 67. How we are getting height? 40 plus 7, and radius of outer one is 20, so likewise 67. Okay, now first of all let us draw front view, top view and side view. Okay, now for front view, here we have line of symmetry from midpoint of length, so we have drawn one vertical line here. Okay, then this horizontal line for this circle, okay, horizontal center line is at a distance of 20 mm from top. So from top we have drawn line at a distance of 20 mm using offset command, and this line we have extended in this direction also. Okay, in right hand side view also. Okay, so once you get center, this distance is how much? This point, this line to this line is 20 mm. Okay, so using offset you can get it. Now in front view you can see three circles, three concentric circles, 1, 2 and this is third one is semicircle. So inner one is having diameter of 16, so let us take a circle, radius will be 8 mm. Okay, then second circle is having diameter 28, so radius will be 14 with same center is 14. You see, similarly outer one is having radius of 20, take a circle, outer one is having radius of 20. Okay, so once you get it, okay, this outer one is semicircle, so lower part is removed. Okay, now it is going down, how much it is? 40 mm. Now you, at base you can see base is having this height is how much? 7 mm. At base you can see the rectangle, okay, length is complete and height is 7. You see, so length is complete and height is 7. Okay, then this from this point it is going down up to end, up to the surface, it is going down up to the surface. On opposite side also we will have similar thing. Okay, now once we have this, what next? You see, next part is what? um, this rib is having width of 7 mm. Okay, starting at circle and it will end on the surface. Width is 7 mm. Okay, so 7 mm symmetrical about this center line, so 3.5 mm on the either sides. You see, at this place I will draw one line. Okay, I will use offset. How much it is? 3.5. Enter. This line on this side, this line on this side. Okay, I will delete this line, and we know up to cylindrical surface we can use extend command. Up to this, right click on these lines so that they can touch the cylinder. Okay, this rib part is again completed. This portion, this one. The only thing remaining is these two holes cannot be seen, and its center is at a distance of 10 mm from both sides. 10 mm from both sides means this level only, this level only. So here we can have a center line. Okay, this is my center line. Okay, similarly this is again my center line because this is at a distance of 10 itself. Okay, after that use match properties. Take a center line with this one and this one. You see, now hole is having diameter of how much? Two holes, diameter 7. So again 3.5 mm offset. You see, 3.5 mm. So what can we do? Have a line. Take a use offset. How much it is? 3.5 mm. Okay, this line on this side, this line on this side. Take a, you can match properties. Take a dotted line on this side. You see, this and one sec. Repeat match properties from dotted line to these two lines. Okay, these are dotted lines. I will remove this line here. Okay, and same thing is there on opposite side.
So you can use mirror, select object. These are my object. Enter. About this, you can have it like this. Now this is my complete object. You see, my front view is completed. Very simple. Okay. Now top view. Top view. What we can do? We can have projections from front view. Okay. कैसे? You see, change. Unmute yourself. कुछ तो आवाज आ रहा है. Unmute yourself. Okay. One. This is two. Okay. For rep. Repeat. Okay. Then for circles. One. Here's two. Repeat. This is one and two. Okay. So I think I have all the lines. Now for circles, as this circles can be seen as it is in top view, so I will not project for circles. Okay, I have just projected center line for the circle. Okay. Or you can project this line as a center line itself. You see, you can project it as a center line itself. No need to show by regular projectors. Okay. Now once we have all these things, okay, the thing remaining is, now see what can be seen. Now here you see complete rectangle can be seen as it is. Complete rectangle, see, it is coming like this. Total length, total width, it is going. This circular part again can be seen as a straight line itself. Okay, so you see this complete rectangle can be seen as it is. Okay, now at the end we have, you see here we have circular portion. This is nothing but fillet, and radius of fillet is how much? 10 mm. Okay, you see, take a fillet. Okay, radius how much it is? 10. Enter this line and this one. Okay, in similar way, repeat. Radius is 10 between these two. Okay, now here you can see, okay, this is nothing but a center line again. You can match properties for the center line. Now once you have this centers, okay, diameter of hole is 7. So let us take a circle. Radius is 3.5. Repeat circle. Radius is 3.5. Okay. Now once we have this, which thing is remaining? You see. Now this cylindrical portion, very first thing is this outer one. This can be seen as a rectangle. This one. Take a rectangle having width of 7 mm and length of 40 mm. Take it because radius is 20. So length 40 we already have. You see, width is how much? 7 mm. Enter. So it is like this. Okay. Then after this, now see another rectangle can be seen.
depth will be 20 and width will be this outer one, diameter 28. We already projected it. Where it is? This one is length is how much? 20. Enter, and it is up to this level. You see, and this. Okay. Now once we have this inner hole cannot be seen. It is going throughout. Okay, because depth is not given. So that hole can be shown like this. Repeat line again from this point to this one. Okay. Now once we have this, whatever excess length of projector is there, we can reduce it. Again this one you can reduce. Okay, even for these projectors also. For this one. Okay. Now these two lines are dotted lines. Again you can change the properties. Okay, to dotted line. You see this one and this one. These two are dotted lines. Okay. Now once we have this, okay. Now thing remaining is what? You see, we can trim this portion somewhat. Okay. And we join these lines by uh, this one, light projectors. Okay. You see this thing. This thing. You show it as a light projector 7. Okay. Now once we have this, which thing is remaining? This rib. This rib is starting at this cylinder, and it will end up with the end surface. Okay. So we already have projectors for this. So this is about rib. Okay. So here we can trim excess portions. Okay. Now I think this my object is complete. You see. Okay. So this cylindrical part, this whole is there, shown by dotted, these circles, this rib, everything is there. So once you finish with this one, take it. Now next bit is what? To draw a side view. Take it. Simple. How to get it? Draw projectors first. Change color. You see how many projectors we will have? This one. This thing is two. Repeat. Then for these circles also repeat. For this one. Okay. Then this thing. You see will be extended as it is. Anything else? Okay. In similar way, from front view we are having how many projectors? You see, this is one, this thing is two, then this is three. Repeat, this thing is four. Okay, this, see, this one is five. Okay. Now once we have this, okay, now thing remaining is what? Just to project this in vertical direction. You see. Okay. Now what we will do? On these line we will have vertical lines. Repeat from this point again. We'll have vertical. Repeat.
from this point, one more vertical, repeat, then this thing, repeat, this one. Okay, now we have all the projectors. Here we one center line is there, match properties with this one. One sec, you can match properties of this line with this one because it is a center line. Okay, now once we have all this, okay, now for side view, see what can be seen. Height is 7 mm and length is complete. You see length, height is 7, this one, this is the height, and length is total. First of all, let me change color first. Okay, you see this height is, length is complete, and height is 7 mm. Okay, now this circle cannot be seen, so dotted lines will be there. We are already projected, you see. So here we will be having dotted lines. Okay, so you can short these projectors there. This one even you can make it shorter. Okay, this center line also. Okay, now once we have this, these are dotted lines. Okay, this base portion is finished. Now from this end, it is going up to last. Width is 7 and height is up to end. See this one, width is how much? This thing is, width is 7 mm. 7 mm is this one. Okay, and it is going up to last. So here we will be having this one, this rectangle first. This one, you see. Okay, in similar way, what you will be having, ये तो हो गया. Then this one, this cylinder, ठीक है, having length is 20 and height is 28. ठीक है, you see this cylinder is having length is 20. One sec, length is 20, height is how much? 28. ठीक है, now this hole cannot be seen. Okay, so it is going throughout. So for this hole, again I will put dotted lines here and here. Okay, okay, this one is finished. Now which thing? Reverse from this point, from this point, from cylinder point to end point. So you see this rib is there from cylinder point to end point. Okay, so everything is done. Okay, everything is done. Now sectional view. Now let us have a look at sectional view. Now actually these lines are dotted lines. Okay, but thing is, these are dotted lines, then these two are dotted lines. See, now for sectional view, what happens? You see, at this point when we start cutting, at this point, okay, so cutting, फॉर एग्जाम्पल सपोज टॉप टू बॉटम कट कर रहा है, ठीक है, एट दिस पॉइंट वी आर स्टार्टिंग कटिंग, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट लॉट ऑफ कटिंग, it cutting will start here and it will end at the start of hole. It will end at the start of hole. Hole is where? At this level. ठीक है, तो cutting will start here and at the start of hole. Hole will be completely exposed. ठीक है, तो first part का boundary क्या रहेगा? You see, I will show you. This is my first part. ठीक है, this is my first part. Okay, and this is boundary of first part. Okay, then next thing क्या रहेगा? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कट हुआ. ठीक है, नाउ सेकेंड लॉट विल स्टार्ट एट व्हाट प्लेस? ठीक है, सेकेंड लॉट विल स्टार्ट एट दिस प्लेस. ठीक है, एट दिस प्लेस. तो ये इन बिटवीन देयर विल बी नो एनी एज एज सच. ठीक है, ठीक है,
then after this second part of cutting will start at this level, ठीक है, but and it will go throughout but this circle, ये सर्कल कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड जो स्लॉट है हमारा कटिंग का, यहाँ से अप टू एंड जाएगा, उसमें हमें क्या करना है, रिब को कंसीडर नहीं करना है, ये रिब जो है, ठीक है, रिब इज ए सपोर्टिंग पार्ट और उस पे हम हैचिंग नहीं करते। तो मेरा सेकंड पार्ट देखो, मेरा सेकंड पार्ट का आउटलाइन क्या रहेगा, दिस इज माय आउटलाइन, देन दिस वन, देन दिस डायरेक्शन, दिस कंप्लीट, ठीक है। और इन बिटवीन जो भी आ रहा है आउटलाइन के, दिस पोर्शन यू सी, दिस वन, ठीक है, दिस वन, दिस पोर्शन, ठीक है। ये सर्कुलर होल तो बचेगा ही नहीं यहाँ पे, इट विल गो टू बैक साइड, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड पार्ट, आ रहा है समझ में। व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर हैचिंग, यू सी, ठीक है। हैच में क्या किया, NC31 पिक पॉइंट्स, ठीक है, विच वन, विच पार्ट, यू सी, दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकंड, ये कंप्लीट, दिस इज माय सेकंड पार्ट, ठीक है। एंटर, ठीक है, स्केल, लेट अस टेक 0.5। सर सेकंड साइड का सर्कल क्यों नहीं दिखेगा? सर्कल कौन सा बताता हूं मैं आपको, वन सेक, जस्ट सेकंड, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अब ऑब्जेक्ट को कट करना चालू किया, तो सिर्फ ये जो होल का पार्ट है ना, ये होल का पार्ट देखो, होल विल गेट एक्सपोज्ड, यहाँ से कटिंग स्टार्ट होगा, होल के स्टार्टिंग पे एंड होगा, तो ये पार्ट में हैचिंग लाइन आ गया, मतलब क्या, वहां पे कटिंग हुआ है, ठीक है, आ गया समझ में। नाउ सी, फ्रॉम दिस टू दिस होल के पोर्शन, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, देयर विल बी नो एनी कटिंग, यहाँ से यहाँ तक कुछ कटिंग नहीं रहेगा, तो वो पार्ट पे हैचिंग आएगा नहीं आएगा। अब ये जो रिब है, रिब का पोर्शन कौन सा है, दिस वन, ये इस तरह से, दिस वन, ये जो है, ये सब रिब का पोर्शन है। तो रिब का पोर्शन हम हैचिंग नहीं दिखाते, बिकॉज इट इज हैविंग लार्ज सरफेस एंड स्मॉलर विड्थ, ठीक है। और हैचिंग क्या होता है, हैचिंग इज ए सिंबल ऑफ मटेरियल, मतलब जितना ज्यादा हैचिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है वो, आ रहा है समझ में। तो दैट इज द रीजन व्हाई फॉर वेजेस, ये जो है रिब्स, वी आर नॉट पुटिंग हैचिंग लाइंस, ठीक है। तो वो समझ में आता है कि वहां पे रिब है, वो समझ में आने के लिए रहता है वो, ठीक है। अभी यहाँ से नीचे तक जब आए, तो ये होल, फर्स्ट हाफ पार्ट इज रिमूव्ड, बैक साइड होल इज देयर, ठीक है, तो उसके डॉटेड दिखने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम सिर्फ सेंटर लाइन दिखाएंगे, डॉटेड लाइन हैचिंग लाइन पे कभी भी दिखाते नहीं है, ठीक है। वी नेवर शो डॉटेड लाइन ऑन हैचिंग पोर्शन। तो एज डॉटेड लाइन कैन नॉट बी शोन, तो ये सर्कल के लिए क्या दिखाऊंगा मैं, ओनली सेंटर लाइन, ओनली सेंटर लाइन, एंड डॉटेड लाइंस वी आर नॉट गोइंग टू शो। आ रहा है समझ में, दिस इज वन ऑफ द रूल, गॉट इट, ओके। किसका था यस क्वेरी, सर। हैव यू गॉट यस इट, सर। ओके। यस तो सर। ये हो गया मेरा सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू, दिस इज माय सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू, यू विल गेट इट नाउ, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग स्टार्ट किया था, तो दिस वाज फर्स्ट स्लॉट, होल एक्सपोज हो गया, एंड दिस इज माय सेकंड स्लॉट, ठीक है। बीच में कोई भी एजेस हो, कुछ भी हो, उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो सेक्शनल व्यू के लिए एक चीज ध्यान में रखो कि यू सी आपका कटिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कितने बार स्टॉप हो रहा है, कितने बार होल्स के आ रहे हैं बीच में, ठीक है। सो सपोज दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो दो तीन पार्ट्स के आउटलाइन ड्रॉ करो, होल्स को एक्सपोज करो, ठीक है। और आउटलाइन के बीच में जो भी आ रहा है उसको रिमूव करो, बिकॉज दैट एजेस कैन नॉट बी सीन, और जो पार्ट्स है उसको हैचिंग कर दो, ठीक है। तो उससे आपका वो व्यू कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शनल व्यू, गॉट इट, ठीक है। Now after that only one thing is remaining, that is to put dimensions there, ठीक है, dimensions। सर 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 डाउट डाउट डाउट। हाँ पूछिए। सर वो स्लांट लाइन जो है हमने वहां पे हैचिंग क्यों नहीं किया? स्लांट लाइन, ये जो रिब वाले पोर्शन होते हैं ना, ठीक है, ये जो रिब वाले पोर्शन होते हैं, तो रिब्स का ये जो कोई भी आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में देखे ना, तो रिब्स रहते हैं फॉर सपोर्ट्स, ठीक है। इट इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसका सरफेस एरिया तो लार्ज रहता है, लेकिन विड्थ इज लेस, ठीक है, इन कंपैरिजन। तो इसको भी मैंने हैचिंग कर दिया ना,
तो वो शो करेगा कि मटेरियल का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है, लेकिन एट एक्चुअल रिप का विड्थ कम होने की वजह से मटेरियल का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है। तो ये पोर्शन में मैंने हैचिंग नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या, ये जो पोर्शन है मेरा, दिस पोर्शन इज नथिंग बट रिप। ये सरफेस, ये रिप के अंदर जो भी सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस रिप का है, जिसपे हम हैचिंग नहीं करते। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रूल। सी लास्ट प्रॉब्लम में भी कहाँ पे हमने नहीं दिखाया था, यू सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस वाज रिब ना, ठीक है, दिस वाज रिब। तो रिब के पोर्शन में हमने हैचिंग दिखाया था क्या, ये पोर्शन में नहीं। ठीक है, सो वेर एवर रिब पोर्शन इज देयर वी नेवर शो हैचिंग लाइंस। आ रहा है समझ, बिकॉज हैचिंग शोज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सारे रिब के पोर्शन को अगर हैचिंग दिखाया तो वो मिसलीड करेगा। आ रहा है समझ में? यस सर, यस।